use the free version, you have a little watermark on your screen, and we don't want that. Today, I finally figured out though how to use OBS to stream to multiple platforms with this plugin. So let's teach you guys on how to set it up for yourself. Of course, the first thing you're gonna need is OBS, and I will have a link to download OBS as well too if you want to download for yourself. And what we're gonna do before we start anything for this plugin, you need to update your OBS. So what we're gonna do is go to help, go to check for updates, and we're gonna check for updates. We just want to upgrade to 29.1.2, and with that, we'll be off to a good start. Now that that's updated, we can just reload up OBS, and we're all good to go to use OBS now with this plugin. So what we're gonna do now is just close OBS like so, and we're gonna go to this website here, which I will have a link in the description, and we're gonna go to go download. And when we're in the downloads area, we're of course gonna scroll down. It's a little bit in different language, but we don't want to focus on that. We want to scroll to this part right here and download the OBS multi RTM 64 installer, and we're just gonna download this like slow, and we're just gonna open this on up. Now it's probably gonna ask you don't want to run this and stuff like that, but we're gonna run anyways because it's safe. It just computers sometimes want to be safe anyways. So we're just gonna run that, click install, and then close. And now what we're gonna do is reload up OBS. Now when we open OBS again, we're of course gonna get access to the plugin. You'll see on the top left. Now you can see on the top left here, here's our new plugin, the actual multi-stream output thing. And of course what it's actually going to use is use your normal stream output for streaming whatever main platform you go to. So I stream on Twitch, right? So I just put Twitch in here, right? And then of course we're all good to go there. Now what you want to do is add a new actual stream source. So for example, here I have my kick. I'm gonna delete this for the time being. This is Hey guys, it's Tech Granny here. In today's video, I'm going to teach you how to multi-stream to multiple platforms. We're going to go to this website here, which I will have a link like that, but we're going to run anyways because it's safe. It just and now what we're going to do is reload up OBS. Now when we open OBS again, we're of course going to get access to the plugin. You'll see on the top left. Now you can see on the top left here, here's our new plugin, the actual multi-stream output thing. And of course what it's actually going to use is use your normal stream output for streaming whatever main platform you go to. So I stream on Twitch, right? So I just put Twitch in here, right? And then of course we're all good to go there. Now what you want to do is add a new actual stream source. So for example, here I have my kick. I'm going to delete this for the time being just to show you guys on how to add one. So what we're going to do is click add a new target. When we do add a new target, we're going to of course name this whatever we want. For me, I'm going to name this kick. And then what we're going to do is go get our server key and also stream key for actually kick. So we're just going to place that, and we're just going to place this icon here as well. Now once you've done that, of course you can leave every else is the same. What is it is going to grab your output settings and what you're actually streaming with via OBS. You can customize this if you want to get more in depth, but honestly I don't see the point of it, so we're just going to click done and okay. Once that's added, you're gonna see you have now kick added, and now you of course can add YouTube, Twitch, whatever platform you can, and then you can go from there. And of course if you want to use your other plugin for the vertical plugin, you can use this to stream on actually TikTok, because what happens with it is that you can actually add a separate streaming platform, which is pretty cool. So yeah, not only do you have a vertical plugin now to stream with, you of course have the multi-stream with if you want to use that. I would just recommend you get the vertical plugin. We'll have a video on that, link down below if you want to check that out. That will actually show you on how to set this on up, so that way you can stream to TikTok if you do have access to a TikTok stream key. But with that though, you might be wondering now, how do I go live? What you're going to do is pretty straightforward. You're of course going to click start your stream here, which is going to send the stream to actually Twitch, and then what you're going to do is go to start stream on the kick, and now what we can do is actually go check our kick and Twitch. So you can see now we're live on actually Twitch, of course, and then if we go over to Kick, it's going to send that signal to Kick as well, and you can see we're now live on both platforms, and of course the audio is looping, just ignore that. But that is of course how you add a multi-stream output for OBS totally for free. If you guys did find this video helpful, make sure to smash the like button and get subscribed, because we're almost 1,000 subscribers, so it'd be very much appreciated if you hit that button and help us reach that goal. We're literally less than like 70. In today's video, we'll be unboxing the HP Pavilion laptop. That's right, if you guys Hey guys, it's Tech Granny here, and
install this and then go into our downloads. Once we're in our downloads, you'll see the background removal. We just want to right click on that, or not right click, double click on it, and then say run, and then we just want to open this on up. It might ask if you want to make sure like this is good to install, then you just click yes to go advanced, but if not, you can just click confirm and go install all of this anyways. And what we're going to do is just click for the full process, and once this is, we want to actually add the blurred background too. So what we're going to do is go to plus icon on sources, go to video capture devices, and of course you can just add your webcam, whether it be for you or a camera. I'm using a camera into your OBS. Background removal. So this is of course the plugin we just downloaded. We're going to add this like so. Click OK, and the first thing what you want to do if you want to actually use the actual background blur is actually drop all these down to 0. And what we want to do is actually do the background removal. For me, I particularly like it at a 4. And what you want to do is mess with the depth a little bit later here. But once you have that enabled, you want to focus that and close that. So with that, you can already see that the background blur is actually now in the working. And looks hey guys, it's Tech Granny. We don't want that. Today, I finally figured out though how really any platform we want on Kick as well. And I don't want to use Restream due to the fact that Restream you have to pay for. So finally figured out, of course, the first for yourself. And what we're going to do before we start anything for this plugin, you need to update your OBS. So what we're going to do is go to help, go to check for updates, and we're going to check for updates. We just want to upgrade the 29. Just close over there and download the OBS multi RTM 64 installer, and we're just going to download this like slow, and we're just going to open
So if you are currently personally just watching everything from start to finish, because sometimes it is just human error and we're not aware of something that is pretty blatant, and we know because we're all smart people, but sometimes we just kind of fall off. So the first thing that I would recommend doing is if you go in to add in a window capture and you go to find, say, maybe this is a Chrome window that's open and you don't see it in here, I would make sure, again, I know this is common sense, I know this is stupid, but people do this all the time, make sure that the page is actually open beforehand, because right now, see, pages is closed. I am not seeing this. And keep in mind, this is alphabetical, but I would pay attention to go through all of these also to make sure that you're not just missing it, because sometimes if you're looking for, say, Chrome and you're up here in the C's, Chrome actually shows up as Google Chrome. And this changes depending on, sometimes it changes anyway, depending on the version of OBS that you have. So I would just pay attention to that. Sometimes it's actually just hidden because it'll pull up a lot of stupid things. But say right now we opened up Pages. So we have this open. We are now opening up Pages. Say I make a new document, looks great. I now come back into OBS, so it's open and I'm looking for this, but it's still not there. If you were to close this and double click on this, open this up, now you can see this page is in here and I can add this in. Sometimes, for whatever reason, if this has still not worked for you, what I would recommend doing is just completely removing this source, adding it open, again, making sure that you have the page that you want open before you add in a new source. But as long as that is open, come in here, do a new window capture, and then try and find what you are looking for, which again would be right there. But if you are, say, trying to add in a window capture or even a video capture device, a lot of the time what happens with this is your computer does not allow permission for OBS to access. Depending on what kind of computer that you're using, this is going to be different for everyone. But I can tell you on a Mac, you're just going to want to come up to this little Apple icon, come into your system preferences, and then click on security and privacy. Once you are in here, make sure you are under this privacy tab over here, and you are just going to want to come down to, say, microphone. You can see I have OBS given permission, so this is allowed to access my microphone. You're also going to want to Hello everyone, this is Nidhi and I welcome you to my channel. अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए OBS स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कभी ना कभी आपको ब्लैंक स्क्रीन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा, चाहे आप विंडो कैप्चर ऐड कर रहे हैं या फिर डिस्प्ले कैप्चर, लेकिन जो आपकी स्क्रीन है उसमें कोई भी चीज़ विजिबल नहीं है, एक ब्लैंक स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है। इसका रीज़न OBS स्टूडियो की सेटिंग से कहीं ज़्यादा आपके सिस्टम की जो ग्राफिक सेटिंग है उससे रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन की, जिसकी हेल्प से जो ब्लैंक स्क्रीन का प्रॉब्लम है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड विद दिस वीडियो, हियर इज अ जेंटल रिमाइंडर, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एज वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। OBS स्टूडियो में सोर्सेज में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 2 विंडो कैप्चर्स ऐड किए हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे विंडो में OneNote.exe फाइल यहाँ पर ओपनड अप है, बैकग्राउंड में भी मैंने OneNote को ओपन अप किया है, बट स्टिल हमको यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, एक ब्लैंक स्क्रीन हमको दिख रही है। ऐसे में हमको क्या करना है, इसको हम पहले करते हैं मिनिमाइज। इसके बाद हम जाएंगे विंडो सेटिंग्स में एंड वी आर गोइंग टू सिलेक्ट सेटिंग्स। यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है सिस्टम सेटिंग्स। डिस्प्ले में सबसे नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है ग्राफिक्स सेटिंग का, वो हमें ओपन अप करना है। डेस्कटॉप ऐप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन। अब जो OBS स्टूडियो है वो हमारे सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है वो हम यहाँ से ओपन अप करेंगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सिलेक्ट द लोकल डिस्क सी। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम फाइल्स और यहाँ पर आपको सर्च करना है OBS स्टूडियो। देन यू हैव टू ओपन अप बिन, इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे। 64 बिट इसको ओपन करना है और फिर ये जो OBS 64 है इसको आपको सिलेक्ट करना है और इसको हमें यहाँ से ऐड कर देना है। नाउ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस। अब ग्राफिक्स प्रेफरेंस में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है आपका, उसको आप सिलेक्ट करेंगे विच इज़ योर पावर सेविंग, तो इसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन सेव। तो इस तरीके से
जो आपकी ग्राफिक्स की सेटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज OBS स्टूडियो और इसको हम दोबारा से ओपन अप करेंगे। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो विंडो कैप्चर में हमें ब्लैंक विंडो देखने को मिल रहा था, अब जो हमारा वन नोट है वो यहाँ पर विजिबल है। तो कुछ क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन। अब जो OBS स्टूडियो है वो हमारे सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है वो हम यहाँ से ओपन अप करेंगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सिलेक्ट द लोकल डिस्क C। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे ब्राउज ऑप्शन, प्रोग्राम फाइल्स। अब जो OBS स्टूडियो है वो हमारे सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है वो सर्च करना है, ओपन अप करेंगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सिलेक्ट द लोकल डिस्क C। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे ब्राउज ऑप्शन, प्रोग्राम फाइल्स। अब जो OBS स्टूडियो है वो हमारे सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है वो सर्च करना है, ओपन अप करेंगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सिलेक्ट द लोकल डिस्क C। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे ब्राउज ऑप्शन, प्रोग्राम फाइल्स। अब जो OBS स्टूडियो है वो हमारे सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है वो सर्च करना है, ओपन अप करेंगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सिलेक्ट द लोकल डिस्क C। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे ब्राउज सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है वो सर्च करना है, ओपन अप करेंगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सिलेक्ट द लोकल डिस्क C। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे ब्राउज सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है वो सर्च करना है, ओपन अप करेंगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सिलेक्ट द लोकल डिस्क C। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे ब्राउज में कहाँ लोकेटेड है वो सर्च ओपन अप किया है, बट स्टिल हमको यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, एक ब्लैंक स्क्रीन हमको दिख रही है। ऐसे में हमको क्या करना है, इसको हम पहले करते हैं मिनिमाइज। इसके बाद हम जाएंगे विंडो सेटिंग्स में एंड वी आर गोइंग टू सिलेक्ट सेटिंग्स। दिख रही है
यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है सिस्टम सेटिंग्स। डिस्प्ले में सबसे नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है ग्राफिक्स सेटिंग का, वो हमें ओपन अप करना है। डेस्कटॉप ऐप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन। अब जो OBS स्टूडियो है वो हमारे सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है वो हम यहाँ से ओपन अप करेंगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सिलेक्ट द लोकल डिस्क सी। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम फाइल्स और यहाँ पर आपको सर्च करना है OBS स्टूडियो। देन यू हैव टू ओपन अप बिन, इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे। 64 बिट इसको ओपन करना है और फिर ये जो OBS 64 है इसको आपको सिलेक्ट करना है और इसको हमें यहाँ से ऐड कर देना है। नाउ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस। अब ग्राफिक्स प्रेफरेंस में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है आपका, उसको आप सिलेक्ट करेंगे विच इज योर पावर सेविंग। तो इसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन सेव। तो इस तरीके से जो आपकी ग्राफिक्स की सेटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज OBS स्टूडियो और इसको हम दोबारा से ओपन अप करेंगे। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो विंडो कैप्चर में हमें ब्लैंक विंडो देखने को मिल रहा था, अब जो हमारा वन नोट है वो यहाँ पर विजिबल है। तो कुछ इस तरीके से आप ग्राफिक्स की सेटिंग करके जो ब्लैंक विंडो का प्रॉब्लम है OBS स्टूडियो में उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है और जो आपका OBS स्टूडियो का ब्लैंक विंडो का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हुआ है, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। Well, that's all for this video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. OBS स्टूडियो में उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है और जो आपका OBS स्टूडियो का ब्लैंक विंडो का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हुआ है, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। अगर आप किसी वेब पेज पर या वेब ब्राउजर में कुछ लिखना चाहते हैं, एनोटेट करना चाहते हैं, गूगल पर जैसे ही आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इन सभी में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको वाटरमार्क मिलता है तो किसी का यूजर इंटरफेस ही समझ में नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए OBS स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कभी ना कभी आपको ब्लैंक स्क्रीन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा, चाहे आप विंडो। हाय गाइस, दिस इज आइडिया ये तो ही आप रेंज है आइडियली 2500 kbps के लिए ये वाला हम प्रोफाइल लेंगे। सो आई जस्ट राइट समथिंग। तो आपका साइज को शो हो रहा था कि यू आर स्टिल अवेटेड, योर विंडो इज स्टिल अवेटेड। वो जैसे हम उस वहाँ आप जाकर प्रोसेसर आपको चाहिए, i5 प्रोसेसर चाहिए है, इंटरनेट स्पीड If you are looking for a free screen recorder, then OBS Studio can be a great choice for that. इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप चाहे इमेजेस ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव नरेशन। हाय, आई एम निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस। यदि हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो अगेन वी विल गो टू दिस सोर्सेज और यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे विच इज और ऐड सोर्स और फिर हम जाएंगे टेक्स्ट ऑप्शन पर। वी विल क्रिएट न्यू टेक्स्ट, सिलेक्ट ओके और इसके बाद जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, इट कैन बी योर चैनल नेम या फिर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यदि आप चाहें तो कोई दूसरा फॉन्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका साइज सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आप इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यू कैन गो फॉर ब्राइट कलर। ठीक है, कमेंट क्या रखना, इस तरह से अलाइन गोइंग टू सिलेक्ट वाला ऑप्शन मिल, यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यदि आप इसे पीछे करेंगे तो जो इसका डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से यू कैन सिलेक्ट द डायरेक्शन जिस भी साइड आप इसको स्क्रॉल कराना चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वर्टिकल स्पीड। इसे भी आप दोनों चीज़ें हमने 0 देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अब हम आपका कवर हो रहा है तो ये देखिए। हाय, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल। अलॉन्ग विद दैट कैसे हमें टेक्स्ट ऐड करना है अपनी स्क्रीन पर। टेक्स्ट
अब हम इसको करते हैं सेम थिंग इन द प्रीव्यू स्क्रीन करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन दूसरी स्क्रीन पर भी आ जाएगी। तो जो भी चेंजेस आप यहाँ आ जाएगा। क्लिक ऑन वीडियो कैप्चर डिवाइस और फिर आपका जो और यहाँ एड द वीडियो अकॉर्डिंगली। तो जो पोर्शन मैं यहाँ पे शो करना चाहती हूँ वो मैं शो कर सकती हूँ। वीडियो यू कैन हैव वट एवर यू वॉन्ट टू एड अप ओवर हियर। तो नीचे आप सोर्स ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं कि आप क्या क्या यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जो आप ऐड अप कर सकते हैं। आप चाहें तो इमेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे इमेज ऑप्शन पर। इसी तरीके से जो डू नॉट वांट टू सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, वी विल मिनिमाइज और ओबीएस विंडो। और जो हमारा पावर पॉइंट है, सपोज हमें यहीं पर कुछ बताना है तो हम यहाँ पर वी आर जस्ट गोइंग टू राइट समथिंग ओवर हियर। नाउ इफ यू वांट टू सी कि जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो वहाँ पर आ रहा है या नहीं, तो मिनिमाइज दिस थिंग। अगेन वील गो टू ओबीएस। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो भी हमने वहाँ कुछ भी लिखा है, बताया है, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। अगेन वी आर गोइंग टू दिस पावर पॉइंट विंडो। वी आर जस्ट चेंजिंग द स्लाइड। सो यू कैन सी ओवर हियर जो हमने स्लाइड चेंज की है वहाँ पर वो स्लाइड भी यहाँ पर आ गई है। और ये आपको जब रिकॉर्डिंग आपका हो जाए तो यू हैव टू क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसके बाद ये आप रिकॉर्डिंग कहाँ देख सकते हैं, ये जो फाइल ऑप्शन है यहाँ पर आप जाएंगे और फाइल में आपको ऑप्शन मिलता है शो रिकॉर्डिंग्स का। यू हैव टू गो एंड क्लिक दैट, सेलेक्ट दैट और फिर वहाँ जाकर आप अपने रिकॉर्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। सो ओबीएस इज बेसिकली अ स्क्रीन रिकॉर्डर। आप जो नरेशन दे रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो भी उसमें रिकॉर्ड होगा, ऐसा नहीं। हाय, आई एम निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय। सो विदाउट एनी डिले ओपनड अप अ पीडीएफ। आपको ओपन कर और यहाँ पर हम सारे सोर्सेज ऐड करेंगे। सबसे पहले वील क्लिक ऑन प्लस ऐड सोर्स और यहाँ पर हम जाएंगे विंडो कैप्चर पे एंड देन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर दैट आई हैव शोन यू अर्लियर। यहाँ मैंने पहला विंडो कैप्चर ऐड कर लिया है, दैट इज योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बिफोर वी आर गोइंग टू ऐड अनदर विंडो कैप्चर, हम इसको थोड़ा इसका साइज जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड द पीडीएफ। नाउ एज यू कैन सी जब हमने ये जो दूसरा विंडो कैप्चर ऐड किया है तो जो हमारा प्रीवियस विंडो कैप्चर था वो स्क्रीन से हिडन हो गया है, बट दैट इज एक्चुअली बिहाइंड दिस करेंट विंडो कैप्चर। तो जब आप इसको ट्रिम करेंगे या फिर इसका जो साइज है उसको रिड्यूस करेंगे देन यू कैन फाइंड इट। जो आपका विंडो कैप्चर है इट इज स्टिल ऑन द स्क्रीन एंड इट इज हिडन ओवर देयर। So we can see we have a PowerPoint presentation over here and we are also having a PDF file over here. तीसरी चीज़ हम यहाँ पर एक इमेज भी ऐड करके देखते हैं। इमेज ऐड करने के लिए सोर्स पर जाएंगे और यहाँ पर हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। ओके, ब्राउज। तो ये हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर आ गया है। नाउ यू नीड टू नो दिस थिंग कि जितनी भी चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आपके जो ओबीएस विंडो है, ओबीएस स्क्रीन है जो विजिबल होगी उसमें रिकॉर्ड होंगी। यहाँ पर जो आप इमेजेस और जो भी कंटेंट डालेंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा एंड जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स सो एज टू मेक इट क्लियर कि किस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पर अपना जो वीडियो है, वेबकैम है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। यूल गो टू वीडियो कैप्चर डिवाइस और फिर आप अपने कैमरे को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो वो भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर एक ही प्रेजेंटेशन रख सकते हैं। यदि आप दूसरा ऐड करेंगे तो वो आप बिहाइंड दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड द देंगे तो हमारा जो इमेज फाइल होगा। तो इस तरह के बाद मैं ओबीएस को मिनिमाइज कर रही हूँ। नाउ आई एम चेंजेस यहाँ पर कंटेंट ऐड नहीं कर, इतनी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू हैव द स्पेस, आप यहाँ पर अपना वेबकैम भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, आई विल जस्ट शो यू हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू लुक लाइक। इस वीडियो फाइल में आपको कोई भी साउंड इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग के पहले मैंने ऑडियो सोर्स ऐड नहीं किया। तो जब भी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। Are you looking to record two screens and explain what we are doing? Because it sounds like magic. It sounds like some voodoo or some crap's going on. And it's not. It's nothing crazy. It is just essentially doing something that you may have been in your influence. Maybe we're going to take that. And what we're going to be doing is going to settings. And we're going to go to video and we're going to just be changing this to 3840. So 3840. I put an 8 at the very beginning.
And let's check and make sure that was right. That says 3,840. Okay, my math's not awful. So you'll want to make sure that if you're doing 2, you just plug in the resolutions that I mentioned into the base canvas resolution. And I'll just leave that up there one more time for you guys. So figure out if you want to do 720p or 1080p and how many monitors. What's going on, guys? Chad here. Today I'm going to show you how to step up your transition game from looking something like just this with simple fades to looking pretty cool like this. What's going on? I've got some huge news today because today we're Plus, and it gives you the ability to essentially make content for TikTok, YouTube, all of my vertical stuff. Goodbye. Bye-bye. There we go. So we got that stuff removed and it is gone. And this is just as if you're starting from scratch. You will probably actually manually adding your alerts to every single scene in OBS is at this point now so 2021. You shouldn't have to do that anymore. And the reason why is because we're going to be talking about a very powerful plugin for OBS called Downstream Keyer. Downstream Keyer is going to essentially let you take all of the graphics, alerts, and even audio sources that you have piped into OBS and essentially apply them to every single scene all at once, and you can toggle them on and off at any moment's notice and have complete control of your stream. Now that we're over the computer, I'm going to click on Downstream. YouTube channel or your other social media accounts, that's great. But we can also, have it show up down here, and we could pause it at any point in time. I've to place. And to keep mine organized, I'm going to name mine DSK and then do a dash, and then I'm going to name this slideshow. Let's just say slideshow. If you wanted to do lower thirds, go ahead and do that. We're just going to use a slideshow for this because I've kind of curated a slideshow. But the cool thing is, since it works through any scene, essentially. Have you ever recorded anything in OBS Studio and had the issue where some audio was louder than the other whenever you exported it and you just had issues editing that in your program? Well, today we're going to be taking a look at a feature called multi-track audio recording, and this is going to fix. In today's video, we're going to be talking about OBS Studio Mode and how to use it. Set up OBS Studio Mode. It's probably a button you've seen over here, and you may have clicked it before and had no idea what it did to, and it's going to be beneficial for people who live stream or recording or need to just change stuff on the fly inside of OBS without people seeing them screw around with stuff that's in a scene. So before we really get into that, we're just going to talk about what your scenes are. If you don't know already, that's going to be over here on the left. We can see that I have a monitor and a webcam. I'm going to turn studio mode off and show you what happens essentially. So if I was recording or live streaming, anything that's on this screen here is what they're going to see. So if I drag the How To Tech logo around, you're going to see me dragging it around on stream or while I'm recording. And that's not really that optimal for most people. And if I transition to my camera and you're just seeing my camera, this is the same thing. You're just going to see this on the live stream or the recording. And same thing if we went back to my monitor, and we can see we've got 3 scenes here, and we're going to mess with them a little bit and see what studio mode it is. So I'm actually going to go to the monitor and I'm going to leave it here, and then we're going to click studio mode. And now that we're in studio mode, we have a preview on the left hand side and then a program monitor on the right hand down to adjust things. Like I said before, if you're playing video games or something, say down and say that's where I like it. I'll leave it. I could lock these if I wanted to. And we didn't have to edit that where people are seeing us drag stuff in and move it around and organize it. So that is the big positive of this. There's some other things inside of here we're going to talk about because I think that's interesting. One is going to be the slider. I'm going to switch over to the camera so you can really see what's going on here. This is like, it essentially allows you to take what's on your program and then go to your preview, and it allows you to just kind of fade it. So if you wanted to manually fade that, you could do that. You could also use pre-existing transitions that you have. So if you had like a stinger transition or a fade or a cut, you can specify what transition you're going to use before you go to the preview, before the preview is essentially on the program. So if we leave it at this right here, I believe it's going to use my default transition, but yeah, if I click cut, it's just going to cut to the other. So if I go to monitor and webcam and I click cut,
it's going to do a hard cut over here. And if we wanted to, we could fade by 300. We can change this up. We can essentially do whatever we want. We can add other ones. That be some things I want to specify. So a dupe and a making on it. So you can, for the most part, look at a dupe and I'll pull this down for X to seen in the preview. So for example, like some things I want to mention about this as well. One is the main computers probably are as big, so probably suggest not using studio mode. So yeah, guys, that's going to be all for this video. If you enjoyed, you know what to do. Go ahead and hit that like button. Get subscribed if you're not already, and also be sure to turn. Have you ever recorded anything in OBS Studio and had the issue where some audio was louder than the other whenever you